妮蒂姐姐说过，干完这一单就有花不完的金星。Would anyone fall in love here? 这里似乎有一对有缘人。Great love, great miracle. Retain more water. Then, are very blessed as our Mother Earth has gifted us with a variety of... Kitty, that was just a mirage. There is... Oh, little kitty, don't jump. Water? Wait, little kitty, don't jump in it.
time. Kitty's scared. I understand, little kitty. After all, a cemetery is where all the dead bodies are kept as they begin their decomposition process. Well, that's a spooky question. But let's look at it from the perspective of science and allow me to explain to you and our lovely friends what happens to our body after we die. Zoom in. Death is inevitable, and so far, nobody has managed to escape this natural process since the dawn of humanity. Yes, although the thought of death frightens everyone, but what happens to our body after is really fascinating to know. Once a person stops breathing, his heartbeat stops and his brain dies. The doctor declares the person dead, and the body immediately begins the decomposition process. As soon as the person dies, the body begins the first stage of decomposition called primary flaccidity, in which the person's muscles relax as the jaws fall open while the eyelids lose the tension and close down. At the same time, the body starts to lose heat as its temperature lowers down to match with the area around it, in the process with a spooky name known as the death chill. Then, within minutes after death, the blood flow stops and it begins to settle in the lowermost part of the body. And after a few hours, we begin to see the first visible sign as the skin in those areas starts to turn purplish in the stage called livor mortis or post-mortem stain. After that, within 3 to 6 hours, the once relaxed body starts to contract in the process called rigor mortis, and this stiffening spreads through the muscles, and its speed depends upon the person's age, gender, and environment. But this contraction lasts only till 20 to 84 hours, after which the body again goes back to relaxed mode in the stage called secondary flaccidity. After this, अगर गेम वो भी जीत बोल लो क्या भाई मंकी किंग। और तो मैंने तो भी वहाँ पे क्लोन बना के छोड़ दिया। अब यहाँ पे ओडी जा रही तो ओडी बन गई तो क्लूलिया की चीज है तो उसी के डेड इन्होंने भाई उसी के दी जो कि ब्लू से रिवाइव बड़ा तुम लोगों को भी कौन सी आती होगी, कौन सा तुम चाइना के हो। ओके सो गाइस अभी हमारे पास दोबारा कंट्रोल्स आ चुके हैं और लिटरली मंकी किंग ओपी है। मतलब मेरे को तो भाई मजा आ रहा है इसमें, और शायद से बंदे भी नूबड़ा हैं क्योंकि मैंने उनके सामने किल करके जो है डेड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था मैं, बट उन लोगों को समझ में नहीं आया। ओके यहाँ पे मेरा पार्टनर गड्ढे बना रहा है, क्यों किसी को नहीं पता, इसे भी नहीं पता शायद से भाई, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। ओके समय यहाँ पे भी भाई इलेक्ट्रिकल सैबोटाज हम लोगों ने दे रखा है और मैं वही यहाँ पे सकता है साथ में इतनी जल्दी मेडवे पाऊँ क्योंकि तुम्हें पता भाई ये स्टीमर कितना अब तो बहुत अच्छी जिसकी मदद से तुम चाहो तो ईजिली किल भी कर सकते हो भाई। लिटरली ओपी रोल है मंकी किंग एकदम ही। ओके सो यहाँ पे मेरा किल का कूल डाउन भर चुका है तो मैं चाहूँ तो चल सकता हूँ, बट मैं यहीं पे पड़ा हूँ क्योंकि डॉक्टर भाई कभी भी आ सकता है रिवाइव देने के।
痛快！准备好了吗，小船员？我在这儿。我的地盘儿，我做主。
bringing homes to life with the Cotswold Company. Discover our range at cotswoldco.com. तो मैं जहाँ फिर से आ चुका हूँ मैं नए नए रोल अपने थंबनेल में लगा के एक और वर्सेस करने। पर आज का वर्सेस जो है छोटा सा होने वाला है, क्योंकि आज का वर्सेस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ दो रोल्स के बीच में। ये दोनों ही रोल अपने अपने भाई फैक्शन के एक नंबर के खतरनाक है, गुंडे हैं, डॉन टाइप के हैं, मवाली हैं, पता नहीं ना जाने क्या क्या है। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों रोल्स का वर्सेस। सबसे पहला रोल जो है वो रोल है शेरिफ। अब इससे नल्ला रोल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गजब बेइज्जती है, क्योंकि अगर ये किसी भी गलत बंदे को मारता है तो ये खुद ही मर जाता है। मतलब ये अपने साथियों को नहीं मार सकता। ये क्या बात हुई भाई? मतलब अगर अपने साथियों को भी मार पाता ना तो क्या ही बात होती, बट ऐसा नहीं होता और ये खुद ही मर जाता अपने साथी को मारता हुआ देख। बट ये इम्पोस्टर और न्यूट्रल की लंका लगा सकता है, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पे ये माशा नाम की बंदी पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रही है। शायद से ये पहचान चुकी है कि मैं हूँ डीमन किंग या डीमन लॉर्ड या फिर जो भी तुम लोग बोलो। पता नहीं, एक तो मेरी कॉस्ट्यूम से अब लोग बाग पहचान जाते हैं। और यहाँ पे ये माशा दीदी मेरे साथ चल रही है। क्या माशा दीदी इम्पोस्टर है या फिर सीर है मुझे नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा। माशा दीदी आप क्या हो? मैं नहीं बताऊंगा। आपको किल करूँ क्या? किल कर, अगर मैंने इसे किल करा तो डॉक्टर भी नहीं है गेम में, डॉक्टर भी नहीं बचाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा होकर थम्स अप दिखा देता हूँ। मतलब ये बंदी सेफ है, ये बहुत देर से मेरे साथ है, इसने अब तक मेरे को किल नहीं करा। और जिस हिसाब से ये सिक्योरिटी में खड़ी हुई है, ध्यान लगा रही है प्रतिष्ठा अनुशासन से, मुझे लगता है कि ये शेरिफ, ये वाइट जैक है। शेरिफ का को बोल रहा था भाई, शेरिफ तो मैं। अब यहाँ पे हम जो है तीन बंदे एक साथ खड़े हैं, जो कि है ब्राउन में और पर्पल। इसका मतलब क्या होता है? हम तीनों के तीनों हो चुके हैं सेफ। अब अपना शक जाएगा सीधे सीधे सियान पे। तो सियान का भाजी पाव मैं बनाने वाला हूँ अगली मीटिंग में। अभी रुक जाऊँ मैं, ज़्यादा बेहतर है। मैं चाह रहा हूँ कि इम्पोस्टर किल कर दे तभी कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे किसी पे बेफालतू में किल करके अगर मैं मर गया ना तो डॉक्टर भी नहीं आएगा बचाने इस बार, क्योंकि डॉक्टर गेम में नहीं है। मैं इसे किल करूँ, सिक्योरिटी में खड़ी हुई है यार वो। अगर मैं किल कर दूँ और उसने बोल दिया कि मैं ही इम्पोस्टर हूँ तो क्या होगा? ओके, मैं रेड को यहाँ पे किल करके ट्राई करने वाला हूँ, बट रेड भाई यहाँ पे खड़े हो गए और मीटिंग बिठा दी। वो उल्लू के पट्टे ने मीटिंग बिठा के खुद ही को, मतलब मेरे को उल्टा सीधा गैस लेके मर गया। बस इतना ही दिमाग चाहिए। और इम्पोस्टर ने अब तक एक भी किल नहीं करा और ग्लूटोनी ने एक भी बंदा नहीं खाया, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने ही बड़े नूबड़े इम्पोस्टर और ग्लूटोनिया है। मतलब ये गेम हम इजीली जीत सकते हैं, क्योंकि इम्पोस्टर के बस की किल करना है ही नहीं। तो हम ही जो है इम्पोस्टर को किल करके इस गेम को जीत जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा सा मुआयना ले लेता हूँ। मुझे ना जाने क्यों पिंक पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि पिंक अपना इम्पोस्टर हो सकता है, तो मैं पिंक को किल करने वाला हूँ। ये पिंक और ग्रीन और पर्पल एक साथ चलना है, कोई बात नहीं, हम तीनों एक साथ चल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पिंक भाई ने अपना एस्ट्रॉइड दिखाया, यानी अपने पिंक ने दिखाया, ग्रीन ने दिखाया, पिंक ने दिखाया। पिंक अपना सेफ होते हुए पर्पल भी अपनी सेफ हो गई। इन दोनों ने एस्ट्रॉइड दिखाया और हम तीनों यहाँ पे हो चुके हैं सेफ। इसका मतलब क्या है? ये बचे हुए लोगों में से कोई ना कोई इम्पोस्टर है। 我的子弹上都刻着那 उन बचे हुए लोगों की खटिया खड़ी करने का काम है मेरा, तो मैं जा रहा हूँ भाई खटिया खड़ी करने। बट इतने में ही ब्राउन की डेड बॉडी होती है रिपोर्ट और हमने किसी को भी वोट आउट नहीं करा, क्योंकि हमें पता चल जाती है कि ट्रिक्स्टर का काम है और ट्रिक्स्टर ने करा है ट्रिक। पता नहीं क्यों आया ट्रिक्स्टर गेम में। मतलब अच्छा है डॉक्टर नहीं आया, वन वैसे भी डॉक्टर का कुछ काम नहीं होता जब ट्रिक्स्टर गेम में होता है। और कोई एक महान इंसान मेरा गेम देख रहा है, वो भी रात के 2:30 बजे, तो उसको भाई बिगेस्ट शाउट आउट। जो भी है भाई, मैंने नाम नहीं देखा कौन स्पेक्टेट कर रहा है, बट ये बंदा जो भी है रात के 2:30 बजे मेरा गेम देख रहा है। अब पता नहीं क्यों देख रहा है। आई मीन भाई रूम ज्वाइन कर लेता भाई, रूम में बंदे कम थे जब मैं रूम में ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे येल्लो भाई जा रहे थे तो येल्लो भाई को किल करने वालों, क्योंकि मुझे पता है येल्लो इम्पोस्टर है। तो येल्लो तू गया मेरे हाथ से और चल 准备好了吗，小船 मेरे 员？ सामने दादागिरी 我 करेगा। 在这 हाँ 儿。 मेरे सामने दादागिरी करेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओके भाई भाई टाइम मास्टर नहीं ओके अच्छा जिंदा नहीं हुआ। आया बड़ा कहीं से मेरे सामने भाई, मेरे सामने भाई दादागिरी कर रहा था मेरे सामने। हाँ नहीं तो अब यहाँ पे कौन आ रहा है? ओ वाइट आ रहा है, वाइट इम्पोस्टर, वाइट दूसरे इम्पोस्टर, वाइट को किल करना है मेरे को। नहीं टाइम मास्टर ने काम अच्छा कर दिया। अब वाइट गया मेरे हाथ से। चल बेटा पहली फुर्सत में मेरे को मार दिया। मेरे को क्यों तोड़ा भाई? मेरे को क्यों तोड़ा यार? ये कोई बात होती यार?
बोल के लाया था मैं ये गुंडा गुंडा। अब हम बनेंगे ना असली गुंडा, अब हम बनेंगे मंकी किंग। मंकी किंग का कार्ड वैसे तो मैंने लगाया नहीं है, I mean, लगाया तो है मंकी किंग का कार्ड ही। और अब हम यहाँ पे बनेंगे मंकी किंग। साथ में भाई अच्छे अच्छे रोल्स के सजेशन दे रहा था। वैसे तो तीनों इंपोस्टर का वर्सेस आने वाला था, बट मेरे पास जो है सारे रोल कार्ड्स खत्म हो गए, तो मैंने फिर बोला क्यों ना आज स्पेस क्रू वर्सेस इंपोस्टर का। यहाँ पे एक बात सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारह वो हम गेम किस सीखेंगे अपन लोगों को। और पड़ेगा एरो जाए ब्राउन पे जाए, एरो ब्लू पे चला गया गलती से, शिट एरो ब्लू पे चला गया। प्लीज ब्राउन पे ही जाना चाहिए भाई, एरो जाए ब्राउन पे जाए, एरो ब्लू पे चला गया गलती से, जाना चाहिए भाई, एरो जाए ब्राउन पे जाए, एरो ब्लू पे चला गया। जो एरो है वो ब्लू पे क्यों, ये लोग नहीं समझ में आया भाई। जोड़ा ब्लू निकला तो यहाँ पे एक सीन समझ में आता है, I mean, मेरे को अभी समझ में आया कि अगर ब्लू निकला तो पिंक भी मरेगा। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रुके। दोनों प्यार भरा जोड़ा एक साथ जाता हुआ, रब ने बनाई जोड़ी, गेम ने तोड़ी जोड़ी। हट खैर भगवान इनकी जोड़ी को जो है शांति दे और इन दोनों को स्वर्ग में पहुंचा दे। पता नहीं पहुंचाएगा भी या नहीं, I mean, काम तो इनके नहीं थे। खैर अब मैं जो है यहाँ पे बिल्कुल ही निहत्था हो चुका हूँ, यानी अब मैं गेम को नहीं जीत सकता, किसी भी हाल में मैं गेम को नहीं जीत सकता। अगर मैंने इंपोस्टर्स भी एलिमिनेट करा दिए तब भी नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरे जो लवर्स थे वो दोनों ही मर चुके हैं। क्या फायदा हुआ मेरा गॉड ऑफ लव बन गया। मैंने दो बंदों को मतलब दो जनों को उनका प्यार दिलाया और एंड में क्या मिला मेरे को, हार। क्या फायदा मेरा गॉड ऑफ लव बन गया यार। खैर क्या ही कर सकते हैं अब, कितना गंदा सीन हुआ मेरे साथ। अब यहाँ पे नकली वीरिस 11 जो है यहाँ से वोट आउट हो चुका है और अभी भी एक इम्पोस्टर बचा है, यानी ये गेम इम्पोस्टर्स अपने हाथों में ले गई इजीली। फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार, एक गेम प्ले और लगाना पड़ेगा मेरे को, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट रोल कार्ड है। अगर उस रोल कार्ड में गेम प्ले निकलता है तो ठीक है, वरना तुम लोगों को पता है ना क्या मिलेगा, तुम लोगों को पता है ना क्या मिलेगा, तुम लोगों को देखने मिलेगा बैड लक। खाओ माँ कसम भूपेंद्र जोगी। और मेरे को बैड लक डालने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज आता है। ओके तो मैं अभी यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ भाई पहले तो सियान को वोट आउट कर दो, क्योंकि सियान अपने इम्पोस्टर हो सकता है, बट नहीं किल कर दिया उसने। इम्पोस्टर जीत कर तो यहाँ पे भाई हम दोबारा बनेंगे क्यूपिड, और इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मेरे जो मिनियंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल के एकदम ही प्रो हो, वरना लास्ट गेम की तरह मेरे को दोबारा से हार का मजा चखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो लास्ट रोल कार्ड है वो भी बर्बाद जाए। तो यहाँ पे भाई मैं बन चुका हूँ क्यूपिड और मेरी एबिलिटी आ चुकी है एरो ऑफ लव। ओके गेम में ग्लूटोनियो फ्लैशबैंग दोनों ही बहुत ही ओपी और उम्दा इम्पोस्टर्स आए, इम्पोस्टर्स और न्यूट्रल। अभी यहाँ पे ये जो मेरा नारुतो है ये भी मेरा सब्सक्राइबर है, और ये मेरे से कह रहा है अगर डीमन किंग भाई क्यूपिड हो तो मेरे को प्लीज़ अपना मिनियन बना लो। एंड आई वाज लाइक ओके भाई तूने बोला तो मैं तेरे को मिनियन बना लेता हूँ अपना। और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया एक दिल, जा बेटा ऐश कर। और अब मेरे को तेरे एक साथी ढूंढना है जो कि तेरे से अच्छा हो, आई मीन तेरे जैसे ही हो। तो मेरे को इसके लिए एक लड़की ढूंढनी है जो कि इसकी बंदी होगी। और ये गेम लैग, पता नहीं मेरा गेम लैग करना कब बंद होगा। ओके तो मेरे को अब इसके लिए एक लड़की ढूंढनी है जो कि क्यूट सी हो, प्यारी सी हो एकदम, क्योंकि ये सब्सक्राइबर मेरा क्यूट है, मतलब इसकी आवाज़ से मेरे को पता चल रहा है। वो बात अलग है तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा फ़ोन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ओके मेरे को जाके सब्सक्राइब मेरे को देखना पड़ेगा। क्या मैं इसके लिए येलो को बनाऊँ? नहीं येलो को नहीं बना रहा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं ऑरेंज को अपना जो है इसका पार्टनर बना दूँ। ओके अब तुम दोनों जाओ ऐश करो कोने में जाके। अब तुम दोनों जाओ ऐश करो कोने में जाके। नोटी हो रहा के बहन हैं, नोटी हो रहा भूपेंद्र जोगी। जाओ यार तुम लोग एक साथ रहो। और यहाँ पे सियान ने डेड बॉडी रिपोर्ट की और हम लोगों ने जो है इस वक्त ब्राउन को वोट आउट करा दिया। बट अब मैं अगली मीटिंग में सियान को वोट आउट कराने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या करना है। Kitty says yum. Oh wow. Could your cat really say yum? How cool is that? Almost as cool as our world's largest.
This video is sponsored by Honkai Star Rail. What happens if you break Mario Wonder? So there I was, minding my own business, slapping Goombas as we all do, when suddenly I saw a path that was completely blocked off. My juicy brain got an idea. Elephant Mario can use his trunk to launch spike balls, so what if I try to cheat my way through? Nintendo wants me to go through the level and activate a giant boulder, but am I really gonna let them get what they want? No. The answer is no. I hunt down a spike ball and get it to roll to the left. I smack the pointy orb over a pit and break through the forbidden path. I fall down and find a confused flower. There must be more secrets to find, so I keep exploring. I discover a pipe and stuff my big elephant butt through it. When I get into the final room, Nintendo's angry minions are waiting. They say, "How'd you even get in here? Oh, that ruins everything. You have to do things in a certain order." So I guess that's what happens if you break Mario Wonder. So there I was, minding my own business, slapping Goombas as we all do, when suddenly I saw a path that was completely blocked off. My juicy brain got an idea. Elephant Mario can use his trunk to launch spike balls, so what if I try to cheat my way through? Nintendo wants me to go through the level and activate a giant boulder, but am I really gonna let them get what they want? No. The answer is no. I hunt down a spike ball and get it to roll to the left. I smack the pointy orb over a pit and break through the forbidden path. I fall down and find a confused flower. There must be more secrets to find, so I keep exploring. I discover a pipe and stuff my big elephant butt through it. When I get into the final room, Nintendo's angry minions are waiting. They say, "How'd you even get in here? Oh, that ruins everything. You have to do things in a certain order." So I guess that's what happens if you break Mario Wonder. So there I was, minding my own business, slapping Goombas as we all do, when suddenly I saw a path that was completely blocked off. My juicy brain got an idea. Elephant Mario can use his trunk to launch spike balls, so what if I try to cheat my way through? Nintendo wants me to go through the level and activate a giant boulder, but am I really gonna let them get what they want? No. The answer is no. I hunt down a spike ball and get it to roll to the left. I smack the pointy orb over a pit and break through the forbidden path. I fall down and find a confused flower. There must be more secrets to find, so I keep exploring. I discover a pipe and stuff my big elephant butt through it. When I get into the final room, Nintendo's angry minions are waiting. They say, "How'd you even get in here? Oh, that ruins everything. You have to do things in a certain order." So I guess that's what happens if you break Mario Wonder. So there I was, minding my own business, slapping
亲上剑与心，闪现党袭击。
着给他一换，他再来一个拍桌子，操！风险只是机遇的另一个名字。Must be for the way unfortunate and to friends. Hey friends, I hope you are all safe and fine during this quarantine. As you must be aware, we all have been asked to stay inside the comforts of our sweet home. So, Kitty and I are doing the same for the betterment of this world and eradication of this new notorious virus. Although everything is going great, unfortunately, because of this situation, we won't be able to bring you today's video. But stay tuned. Our team is trying to figure out a way to work from home so that we can continue to educate and entertain you all. So, make sure to stay at home, stay safe, maintain distance, and wash your hands regularly. Until then, it's me, Dr. Binox, zooming out. Kitty, don't wash the laptop. Oh no. Never mind. Hey friends, before we start today's episode, I have an important message to share with you. As you must be aware, due to certain new policies, you are not able to comment on our videos. But don't you worry, my friends, you can still share your valuable feedback, comments, views, and love at our email ID peekabookidsfeedback@gmail.com. Similarly, you can also visit our Instagram and Facebook page and continue to engage with us. We are looking forward to hearing from you. Kitty, stop! Hey, little kitty, I know these headphones are of no use to us now. But it isn't the correct way to dispose it of, as it's an e-waste and might end up polluting the environment. E-waste? Yes, Kitty, an e-waste. Hey friends, just like Kitty,
many of us might not be aware of the potential danger caused by electronic devices we discard as waste. So, in today's episode, let us understand how this e-waste pollution is affecting us and the environment and find out the way to overcome it. Zoom in! We live in a technologically flooded era where devices such as cell phones, computers, television, and many more have become a part of our lives. But when these devices stop serving their purpose, they become e-waste and are thrown away by us using improper disposal methods that could affect many lives on Earth soon. Yes, because these devices are made of toxic substances that include polyvinyl chloride, mercury, lead, chromium, beryllium, cadmium, gallium arsenide, etc. And when exposed to nature, these chemicals enter the air, water and soil, which further ends up into our bodies, eventually harming us. But how? How do these devices affect the environment? For example, suppose you exchange the new TV set with the old one from the shop. Now, you might think that once the shop sends the old TV to the factory, they will recycle the old product. But unfortunately, that doesn't happen every time. Sometimes, instead of recycling, these factories burn the parts to gain metals like gold, copper, etc. from these devices. And during this process, these parts emit harmful elements such as hydrocarbons, brominated dioxins, and other heavy particles into the air, which is ultimately inhaled by humans and other animals. Well, not only the air, but these particles also have the property to penetrate into the soil, harming its nutritional value that is absorbed as food by the plants that are ultimately eaten up by the animals and even end up on our plates. But wait, it doesn't end there. After harming the air and soil, these harmful particles go ahead and gets mixed with the water that is present underground and degrades its quality. That is consumed by animals and even ends up at our homes through tap water. And if this destruction of natural resources by e-waste continues at this alarming rate, soon things will turn critical for our environment and can harm the entire planet. Hence, we must do something immediately to stop it by following a few small steps that could help us to get rid of this rapidly growing pollution. The first thing we can do is avoid throwing away broken and outdated devices. Instead, you can transfer them to your friends or relatives or to whomsoever who can make the most out of it. And if you don't have to pass them on, you can take them to the manufacturing companies who can recycle them. Also, another critical step you can take is making people aware of it. Yes, you can arrange an e-waste drive in your schools and colleges to educate them about the proper disposal of electronic waste. Trivia time! Did you know we humans generate around 40 million tons of electronic waste every year worldwide? Which is equivalent to disposal of 800 laptops every second. Also, reports estimate that although almost all of the e-waste is recyclable, only 12.5% of e-waste is currently recycled. Now, that's sad. Really, really sad.
Hope you enjoyed today's episode. Until next time, it's me, Dr. Binox, zooming out. Never mind. Hey kids, you liked my videos, didn't you? Before you go, don't forget to click on the subscribe button and the bell so you won't miss out on my latest videos. See you. 我不会让自己被投出去的。Wait, little kitty. Don't go out in space without a spacesuit. Well, we have no choice but to hold until we fix the shuttle's toilet. But going out in space like this could be dangerous. That's an excellent question. Hey friends, so in today's episode, let us explain to Kitty its consequences by answering a spacey question. What if you went to space without a spacesuit? Zoom in. Suppose you become an astronaut and are bored of chilling inside the space station, so decide to go for a spacewalk. Then one thing you should not forget to take along is your spacesuit for obvious reasons. Inside spacesuits, astronauts have the oxygen they need to breathe and the water they need to drink. But imagine what will happen if a naive astronaut with a short-term memory loss forgets to wear his protective suit and floats outside the spacecraft. Well, in that case, the first obvious thing the naive astronaut will feel is a complete lack of oxygen. Yes, as we know, space is almost an absolute vacuum, meaning it is empty. And when our body is exposed to a vacuumed area, it has only 15 seconds worth of oxygen in it. That means if the poor astronaut doesn't get back to the oxygen-rich site of his spacecraft within 15 seconds, then his body will lose all the oxygen and the poor astronaut's brain will go unconscious. And if you think he could hold his breath to get some breathing space, then that's the worst thing we can do in space without a spacesuit. That's because due to the lack of pressure in space, the oxygen located inside the lungs would expand, causing the lungs to rupture, which could be fatal. So instead, it is advisable to breathe out and keep your lungs empty in such a situation. This way, despite being unconscious after 15 seconds, your body can survive up to 2 minutes in space with a little risk of permanent damage. But let's say a naive astronaut managed to get some oxygen supply by a stroke of luck and managed to stay conscious. Well, despite that, it will be hard to stay in space without a spacesuit due to the lack of atmospheric pressure around him. Yes, without the protection of the Earth's atmosphere, the UV rays, X-rays, and gamma rays would not only burn his already bubbling skin, but also damage the DNA, giving the astronaut a terrible sunburn. But that's not it. Due to this lack of atmospheric pressure, the next thing to happen to our astronaut is the vaporization of water in his body, causing it to swell to about twice the normal size. But fortunately, as human skin is very elastic and enduring, unlike popular belief, he won't burst like a balloon, but continue to float in the vastness of space until help arrives.
So in short, if some astronaut accidentally walks out in space without a spacesuit, then we have only 15 seconds to bring them back to safety before it's too 天上 late. 见女星，闪现党袭击。 Did you know the spacesuits used on the International Space Station today remain there all the time? Yes, the astronauts do not have their own spacesuits. The same spacesuit can be worn by several astronauts according to the assignments from the Mission Control Center. And to know more about life on the International Space Station, please check out our video on the same topic. The link is in the description.